Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our Legal Matters. Again, आपसे बस ये शुरू करते हैं program को. We're going to be discussing about litigation, representation and immigration. And as usual, हमारी team हमारे साथ होगी. We'll be discussing all the legal issues. And if you have a kind of an issue to do with litigation or immigration, then you know where to call us. हमारा telephone number आएगा, and also our email will be on the screen as well. So feel free to contact us. This is an interactive program, so we want you to be participating. आपको ये भी बताता चलूँ, obviously this will be our last program for the moment because of Muharram, and we should be coming back soon. Hidayat TV will keep you up to date when our next program will be coming, but for the next period will be Muharram ki wajah se there will be a short break, and inshallah we'll be resuming to carry on giving the legal advice and also being a part of this program to give you the best and representation in legal matters. And again, अभी फिर आपको मैं थोड़ी सी न्यूज़ बताता हूँ. हमारे साथ हमारे जो colleague हैं राज चोपड़ा साहब will be joining us to discuss some of the issues about litigation. But for the time being, as usual, my colleague, my partner, who will be with me, SYED Mansoor Saab. I want to welcome SYED Saab on the program, and we will be discussing these issues. And clearly, बात शुरू ये करते पहले that we've been talking about the litigation side. We talked about personal injury side, and लोगों को ये बताना है that they do have claims and they need to talk to a solicitor. We've helped a number of people in the past and got them the compensation. थोड़ा सा बताएं how we can help them and so they feel comfortable with it. Yeah. Basically viewers को यही बताना चाहेंगे कि अगर आप पिछले 3 सालों में अगर आपका कोई रोड ट्रैफिक स्लिप ट्रिप या कोई वर्क प्लेस पे कोई एक्सीडेंट या इंजरी हुई है, तो एज़ लॉन्ग एज़ वो उसमें आपका फॉल्ट नहीं था, किसी थर्ड पार्टी का फॉल्ट था, तो यू माइट बी एलिजिबल फॉर कंपनसेशन. और हमारा काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है इन टर्म्स ऑफ विनिंग सब्सटेंशियल कंपनसेशन अमाउंट फॉर आवर क्लाइंट्स. तो अगर आपका इस तरह कोई इंजरी वगैरह सस्टेन हुई है तो प्लीज़ डू गेट इन कॉन्टैक्ट विद अस and we'll be more than happy to help you. We can give you advice. ये भी आपको कहते बता दें व्यूअर्स को जो उनकी ज़बान में help करेंगे, so they feel comfortable that they got the right person. That's right. हमारे पास various languages के जो है वो solicitors हैं जो आपकी अपनी ज़बान में आपसे बात कर सकते हैं, be it English, Urdu, Punjabi, Sri Lankan, Tamil, you know, जो भी आपकी लैंग्वेज है, we'll be able to assist you in that language. Not a problem. And again, आप व्यूज़ देख रहे होंगे अभी, हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर आएगा टेलीविजन पे आएगा, ईमेल एड्रेस भी आ रहा होगा, हमारे दोनों ईमेल एड्रेस आएंगे. And because we're going to have a little break in this because of Muharram की वजह से, so there'll be 2 emails will be running so that you can contact us, because बहुत सारे लोगों ने हमें contact करना चाहते हैं and they can contact us and we'll be more than happy to help and to provide that help and advice. शायद आपने mention करा था personal injury का. What about a lot of these people who do suffer from industrial diseases? ये भी तो एक area and clinical negligence. I'll come to that in a minute. But थोड़ा सा explain करें to viewers about the industrial diseases. Industrial diseases within the personal injury is a separate area. इसमें ये है कि अगर आप किसी यानी कि फैक्ट्री वगैरह में काम करते थे जहाँ पे टॉक्सिक मटेरियल्स वगैरह यूज़ हो रहे थे, एस्बेस्टॉस या माइनिंग वगैरह में कर रहे थे, कोल इंडस्ट्री में, तो जब आपने अपनी जॉब छोड़ी उस वक्त शायद आपको ना पता हो कि आपकी जो वर्क प्रैक्टिस थी उसमें आपने कोई आपने कुछ ऐसी चीज़ें इनहेल कर ली हैं जिससे आपकी जो हेल्थ है वो ख़राब हो रही है. जब आपको पता चला आफ्टरवर्ड्स तो उसमें भी आप क्लेम कर सकते हैं. उस जो इंडस्ट्रियल डिजीज़ हैं उसके अंदर आपके पास 6 years का जो है वो लिमिटेशन टाइम पीरियड होता है once you realize that you have suffered some injuries. मगर ये भी हमें व्यूज़र को बताना ही था, the time scale starts from the time they become diagnosed. Diagnosed, yes, that's right. थोड़ा सा बता दें व्यूज़र को that this is important as well, how we go about doing it. जी हाँ, जैसे इमरान भाई ने कहा है कि आपका जो टाइम जो टिकिंग क्लॉक है वो तब स्टार्ट होती है जब आपका जो है डायग्नोसिस जो है वो कंफर्म हो जाता है. उस टाइम से लेके आपके पास up to 6 years होते हैं to bring a valid claim against your employer. शायद साहब अभी चलते हैं, आपसे क्वेश्चन करेंगे, अभी कॉल आ रही से शामिल करते हैं. हेलो जी, वालेकुम सलाम. कौन कहाँ से? मैं मुर्तज़ा बात कर रहा हूँ ब्लैकबर्न से. जी मुर्तज़ा साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम. थैंक यू वेरी मच. आई हैव अ क्विक क्वेश्चन. Yeah.
I got my indefinite stay at the end of March this year. Mm-hmm. When shall I apply for naturalization? Ideally, end of March 2014, or can I apply after 11 months? Okay, so you just got it. अभी आपको मिल चुके ILR, yeah? Yes, I have got the ILR. Okay, and so you want to know when you want to apply for the naturalization? Yeah, that's right. ठीक है, no problem. Any other questions, or I want to ask? No, that's it. That's Fantastic. It. Okay, keep watching the program. Thank you very much. Cheers. You're welcome. जवाब आपको प्रोग्राम में मिलेगा, so keep watching. And viewers को ये बताएंगे that we're here to give you the news and views about changes as well. We will be giving you some real new changes जो आए अक्टूबर के end में, and we'll discuss that later on in the program. Shahid, obviously you just mentioned about the industrial diseases, yeah? Anyway, अभी आपके पास तो कॉल आ रही है, उसे शामिल करते हैं. Hello. अस्सलाम वालेकुम इमरान रिजवी साहब. जी वालेकुम सलाम. Speaking from London. Sorry, I didn't quite catch your name. My name is Arshid Bashir. Imran Saab, I'm calling from London. Ji, welcome to the program, Arshid Saab. Imran Saab, I need to, I want to thank you because, in July, as you know, I applied for, like my 14 years ILR was refused and I went for appeal, and you guys really, gave a good advice, especially Rafiq Saab, and my appeal was allowed, and Alhamdulillah, I got my indefinite last Friday. Fantastic. So thank you very much. And now I want to know that I've my indefinite on 14 years basis. So when I can apply for like naturalization and Hello? for travel documents, then what should I do? Because I won't be able to make Pakistani passport. So if I need to make a British travel document, what requirements do I need, and how can I apply? If you can please give me advice on that. Thank you very much for such a wonderful program, and especially I've got a very positive outcome because of your advices, so I will pray for you guys. Inshallah. Thank you very much. Arshid Saab, aapko mubarak ho. We want to congratulate you. You actually got you won the appeal, and inshallah we were going to advise you what you're going to do about the naturalization. Keep watching the program. इसी तरह हम अपने व्यूज़ों की हेल्प करते हैं. It gives us a very good confidence that आप लोग हमारी अच्छी एडवाइस ले रहे हैं, प्रोफेशनल एडवाइस, we're going to help you. एक और कॉल आ रही से शामिल करते हैं. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. कौन कहाँ से? अली बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से. कैसे हैं आप सर? अली साहब, thank you very much. Very well, thank you. And how are you? अच्छा सर, मुझे सिर्फ ये पता चला था 18,600 का कब तक वो डिसीजन आ जाएगा? बस एग्जैक्ट 3-4 मंथ लगेंगे, 5 महीने वो करेंगे. अगर आप बता सके तो थैंक यू सो मच इसके लिए. ठीक है अली साहब, नो प्रॉब्लम. We've got your question. Okay, welcome. शुक्रिया, थैंक यू. खुदा हाफिज़. वालेकुम सलाम. Views, आपको जवाब इंशाल्लाह प्रोग्राम में मिलेगा. We will run through the questions and help to give you the advice inshallah. Shahid, we were discussing, ये discuss कर रहे थे अभी on the personal injury side. Again, this is, people don't know that this is potentially they have a claim waiting. That's right, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल डिजीज़ हैं ख़ास तौर पे ये होती हैं लेटेंट इंजरीज. आप जब काम कर रहे होते हैं आपको उस वक्त पता नहीं चलता कि बिकॉज ऑफ योर वर्क प्रैक्टिस you might be suffering from some kind of an illness. वो काफ़ी देर के बाद जाके जो है the illness starts taking its जो उसके symptoms हैं नज़र आने शुरू होते हैं. तो उस वक्त तक बंदे जो हैं वो रिटायर हो चुके होते हैं, जॉब उन्होंने छोड़ दिया होता है. बट स्टिल अगर आप वो लिंक जो है कॉजल लिंक इस्टेब्लिश कर लें कि ये जो इलनेस है इसकी रूट कॉज थी that work practice where you were involved, then you can have a valid and genuine claim. And the reason about the Jibad Abdigate, because it's about the causation. This is the cause. Are you the medical doctors होते हैं वही बताएंगे that you suffering for a long term. शाहिद साहब अभी बात करेंगे आपसे. कॉल आ रही से शामिल करते हैं. हेलो. हेलो. जी वालेकुम सलाम. कौन कहाँ से? मेरा नाम इमरान है, मैं सरे से बात कर रहा हूँ जी. अच्छा, वेलकम इमरान साहब. नाइस टू हियर द सेम नेम. शुक्रिया. मुझे ये पता करना था कि मेरी वाइफ का मिसकैरेज हुआ था इस साल के शुरू में, और हम लोग हॉस्पिटल गए थे ऑन टाइम. हम लोग 2-3 बार जाते रहे. मैं समझता हूँ कि हॉस्पिटल की नेग्लिजेशन से ऐसा हुआ था. उन्होंने सही तरह से टेक केयर नहीं किया, और मैंने उसकी ऑफिशियल कंप्लेंट भी की थी हॉस्पिटल के अंदर. और उसके बाद उन्होंने हमें कॉल किया था, हम लोग गए, लेकिन उन्होंने ये बताया कि हमारे सिस्टम में ऐसे हम ऐसे ही करते हैं. हम लोगों ने अपनी पूरी तरफ से पूरी एफर्ट्स की हैं, लेकिन ऐसा हो गया हम इसमें कुछ नहीं कर सकते. हमें सेटिस्फाई नहीं कर सके वो लोग. उसके बाद मैंने फर्दर सिटीजन एडवाइस ब्यूरो के पास गया था. उन लोगों ने मुझे और रेफरेंस दिया कि आप इस इदारे के पास जाएं. मैं उनके पास गया, मैंने वहाँ पे कंप्लेन की.
उन्होंने 2-3 माह लगाने के बाद हमें बताया कि नहीं जी हमने सारी तहकीक की है, उन लोगों ने अपनी तरफ से पूरी एफर्ट की थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये फेयर नहीं हुआ मेरे साथ। तो क्या मैं इसके खिलाफ फर्दर कुछ कंप्लेन कर सकता हूँ कि मैं हैप्पी नहीं हूँ उनके ट्रीटमेंट से? ओके, आपसे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, आपके जो मिसकैरेज हुई थी, आफ्टर हाउ लॉन्ग डिड यू कंप्लेन, उसके पीरियड क्या था आपने, हाउ लॉन्ग आफ्टर? इस साल के शुरू में मिसकैरेज हुआ था, हमने हॉस्पिटल कंप्लेन की उनके डिपार्टमेंट में, वहाँ से उन्होंने हमें कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर उसके बाद मैंने एक और इदारा था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, वहाँ पे कंप्लेन की, लेकिन अभी 3-4 माह के बाद उन्होंने हमें लेटर लिख दिया कि जी हमने इन्वेस्टिगेशन की है, तो हम आपकी अपील इस कंप्लेन को अपडेट नहीं कर सकते, अपहोल्ड नहीं कर सकते, उन्होंने रिफ्यूज कर दी हमारी कंप्लेन। लेकिन हम लोग इससे बहुत सफर किया था, हमने हम समझते कि मतलब इंसाफ नहीं हो रहा। ठीक है, आपका जो आपसे ब्रीफली वेरी क्विकली मैं आपसे जल्दी से पूछ लेता हूँ, तो आपने जो कंप्लेंट है मिसकैरेज की, वो आपने किस बेस पे उनको बताया तो इन्होंने नेग्लिजेंस करी? जस्ट एक्सप्लेन दैट लिटिल बिट। नेग्लिजेंस मैं इसलिए इस तरह कह रहा हूँ कि हम लोग वहाँ पे गए और मेरी वाइफ प्रॉब्लम में थी, तो वो मैं कह रहा जी हमारे पास रूम नहीं है, डॉक्टर्स पेड नहीं है, हम अभी कुछ नहीं कर सकते, you'll have to wait, that's all they said that moment. Okay, so that's when you went down. ठीक है इमरान साहब, we will advise you and keep watching program, आपको जवाब मिलेगा. Thank you for your call. Okay, thank you. I'll watch your program. Thank you very much. Shahin Sahab, I was just going to come on to this subject area about the negligence, and but obviously as Imran Sahab mentioned it, एक और कॉल आ रही है मैं शामिल करता हूँ, then come back to you. Hello. जी वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? जफर बोल रहा हूँ कानून से। जी जफर साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। मैं सवाल पूछना सीगा हर तो मैं इतने 2007 से आया सीगा वर्क परमिट से। जी जी। वीजा उन्होंने खत्म हो गया, उन्होंने ब्रीच ऑफ इमिग्रेशन बाद मेरे को हो गया, ब्रीच ऑफ इमिग्रेशन हो गया मेरे को। ठीक है जी, ठीक है। बच्चे मेरे से पैदा हुए, एक 5 साल की बेटी है, ठीक है, और 2 बच्चे मेरे पाकिस्तान तो आए से नाल, उन्होंने 6 साल हो गए थे आए। ठीक है, मैं ह्यूमन राइट्स कीता है, उन्होंने मैंने ह्यूमन राइट्स दे बच्चे मेरे पढ़ रहे थे तो ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ दूसरा ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਕਟੇਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਮੇਰੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆ ਲਿਵਰਪੂਲ ਆਪਣੀ ਨਾ ਫੀਸ ਨਾਲ ਭੇਜੋ ਨਾਲ FLR ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਭੇਜੀ ਹੈ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣਗੇ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਸਾਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ, ਸਾਨੂੰ जवाब नहीं करते यार। ठीक है जफर साहब, आपने ये FLR कब करा था? हाउ लॉन्ग अगो? जनवरी में कीता था। कब करा था? जनवरी। राइट, ओके ठीक है, ओके ठीक है। सो आप ये क्वेश्चन आप पूछना चाहे व्हाट्स गोना हैपन? या हाँ जी ठीक है, ओके जफर साहब, कीप वाचिंग प्रोग्राम, आपको जवाब मिलेगा इंशाल्लाह, कोई परेशानी की बात नहीं है। वी हैव डन न्यूमरस केसेस, आप जैसे केसेस हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे इसी तरह सिचुएशन में हमने लोगों को एडवाइस कराए और उनको मिल गया ही। सो कीप वाचिंग, आपको बताएंगे भी थोड़ी देर में। शाहिद साहब, वी जस्ट टॉक अबाउट ये कमिंग बैक टू आवर टॉपिक एरिया clinical negligence and जो call आई थी, this is a very important area where people ये सोचते नहीं करना चाहिए, why should we bother, लोग सोचते हैं too much hassle होएगी और इस तरह discourage होते हैं। I want you to tell the people that no, this is their rights and they should do that। बिल्कुल, अगर आप हॉस्पिटल में गए हैं और आपको जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला है, तो you are quite within your rights to challenge the system and the procedures which are in place कि मेरे साथ जो है वो नाइंसाफ़ी हुई है, मेरे से फेयरली ट्रीट नहीं हुआ गया, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं और नर्सेज वगैरह वो भी अंडर ड्यूटी बाउंड होते हैं कि दे शुड ऑफ़र यू the service which is normally expected from them of a reasonable, competent, qualified doctor consultant। तो अगर उनका जो परफॉर्मेंस का लेवल उससे नीचे गिर जाता है, then you have a legitimate reason to complain against that। और obviously the law does provide you to make a claim, but the onus is on you, you know। again अगर आपके साथ इस तरह का कोई medical negligence का claim है, तो आपको प्रूव करना है कि वो जो इंजरी सस्टेन हुई है या उससे ज़्यादा severe even in terms of death, वो जो है was a direct result of the negligence on part of the consultant। शायद साहब अभी आपके पास आते कॉल से शामिल करते हैं, वो carry on with that very well। जी कौन कहाँ से? हेलो हेलो हेलो
लगता है कॉल ड्रॉप हो गई शायद basically it's a duty of care and a breach of duty by the profession. Now there are cases where people जिन्होंने हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन भी हो गया है एक और कॉल आ रही है शामिल करते I'll come back to you जी कौन कहाँ से हेलो जी आप ज़रा ऊंची आवाज़ में बात करें so I can hear you हेलो आपकी आवाज़ नहीं आ रही है please call back and inshallah we'll try to take the call Shahid, what I was talking about there are operations Jordi and they go wrong and there is now a very serious hospitals been recently government की review में आई number of NHS hospitals have failed in the standards that's right so there should be you know I want you to pick that point up obviously I mean government जो है उन्होंने जो है performance targets वगैरह hospitals के लिए रखे हुए हैं कि कितने टाइम पे जो है वो जो patients हैं उनको देखा जा रहा है in terms of the cleanliness hygiene various kind of different जो है monitoring जो है वो criteria जो है वो in place है but फिर भी even doctors nurses are also human and they also make mistake लेकिन आपको ये बताना चाहेंगे viewers को कि अगर आपके साथ इस तरह का कोई mishap हुआ है आपके साथ या आपके loved one के साथ कोई इस तरह की बात हुई है तो definitely you can make a claim for negligence clinical negligence against the hospital or the consultant आपको ये बात बताना ज़रूरी सोचते हैं कि जो डॉक्टर्स होते हैं आप उनको पर्सनली सू नहीं करते वहाँ पे जो है हॉस्पिटल की जो है इंडेमनिटी इंश्योरेंस होती है वो आपको पे आउट करती है तो इसमें ये बात है कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या इदारे को सू करते हैं इन दिस केस बीइंग अ हॉस्पिटल तो उनके पास भी स्पेशलिस्ट जो है वो सोलिसिटर्स और बैरिस्टर्स होते हैं तो आपका केस जो है वो इट नीड्स टू बी हैंडल्ड बाय अ कॉम्पिटेंट एंड क्वालिफाइड सोलिसिटर So because it's a specialist area of a law and not all solicitors do handle clinical negligence cases, RTA road traffic accidents are relatively straightforward. उनका case law वगैरह quite straightforward होता है majority of the time. लेकिन clinical negligence cases जो है they are each and every case is unique and it turns on its own facts. तो viewers को यही बताएंगे कि अगर आपके साथ इस तरह हुआ है तो do get in touch with a competent and respectable solicitor who actually specializes in clinical negligence. And second of all, एक और चीज़ हम ये कहते चलें that a new area which people haven't really realized उनके बहुत सारे problems होते हैं because हमारा उनसे वास्ता पड़ता है लोगों से वो by dentistry में जो जाते हैं like dentists and number of people will be watching say yes मेरे साथ हुआ है and that is another area we can be helping them. That's right. अगर आप like dentist के पास आप गए आपके उन्हें दांत का एक तकलीफ हुई उन्होंने एक और गलत दांत निकाल दिया these things happen because हमारे पास ये cases आ चुके हैं that's the reason I'm talking to इसको भी थोड़ा सा बताएं शायद that why and what's the beneficial to them because there are negligence in that field. बिल्कुल exactly being it अगर आप dentist के पास जा रहे हैं या वैसे general practitioner GP के पास जा रहे हैं या किसी hospital में consultant के पास जा रहे हैं at the end of the day the law applies on a similar grounds आपको पूरा जो है वो legal जो है वो मिलेगा coverage अगर जैसे इमरान भाई ने कहा है कि अगर आप डेंटिस्ट के पास गए हैं और आपके दांत में किसी और में दर्द हो रही थी और निकाल कोई दूसरा गया तो जाहिर बात है ये जो है इनकॉम्पिटेंस है ऑन पार्ट ऑफ द डेंटिस्ट तो आपको उस केस के उस सिचुएशन के अंदर यू हैव अ वैलिड क्लेम फॉर नेग्लिजेंस. सो अगेन व्यूअर्स अगर आप ये सुन रहे हैं इस वक्त जो आपको कुछ बातें आपसे रिलेटेड हैं अगेन लिटिगेशन और representation or immigration or any issues we just been talking about then feel free to contact us या आप अपने वकील से किसी से बात करें but we'll be more than happy to help you. हमारी डिटेल्स आ रही होंगी स्क्रीन पे you can contact us आप ऑफ एयर भी हमारी डिटेल्स ले सकते हैं the control room will provide our contact numbers and we'll be more than happy to help you. Shahid, we have mentioned about a number of these things, dentist issues and a number of problems. I think the clear is the fact is that this is not it's not on a system but either it's become a culture where people been claiming and to an extent personal injury being you or the PI and it was really tarnished but in general people do suffer and they lose out.
That's right. Obviously, there have been some people who have been abusing the system, and obviously the government has stepped in and they have banned certain activities which were leading to excessive and fraudulent claims. You know, तो उसकी वजह से ये हो रहा था कि everybody जो genuine people थे, they were suffering indirectly, क्योंकि अगर आप वो example दें road traffic accident का, there were so many जो है fraudulent claims being made for whiplash injury and claims on the cars, कि वो जो जनरल इंश्योरेंस थी फॉर पीपल हु आर लॉ अबाइडिंग सिटीज़न, उनके प्रीमियम भी ऊपर जा रहे थे, क्योंकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री कह रही थी कि जी हम आई मीन लास्ट ईयर आई थिंक £2 billion was paid out in personal injury. So it's a huge amount of money. So who pays for it? Obviously insurance company, they are not printing money. The money comes from the premiums which are raised by people like you know. Or all of us, you know. So government realized that there was something wrong with the situation, and they stepped in and they have cut out a lot of the activity which was leading to fraudulent or excessive personal injury claims and cases. Very good. अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं व्यूज़, आपको शाहिद साहब ने भी बताया, these are the areas we've been talking about, and we'll be more than happy to take some of your calls on that. Equally, अगर आपके पास कोई employment issue का भी है, again with employment law, अगर आप feel करते हैं you've been unfairly been treated या आपका contract में कोई problem है, then feel free to contact us. और again, अगर आपके पास कोई और litigation issue, landlord and tenant issues about your rights, then please contact us. We'll be more than happy to discuss that. शाहिद साहब, आपसे यही बात कर रहे थे अभी, employment law, landlords and tenants, again these are the new requirements. I'm not going to talk, अभी आपसे immigration के बारे में नहीं discuss करेंगे. Let's just talk about the litigation side, because if you have a contract, then that is very much enforced. So landlord, tenant, ये भी थोड़ा सा बताएं, because we can help him in that matters as well. That's right. I mean, landlords की भी help and landlord and tenants is again it's a very wide and complex area of law. Tenants के भी rights होते हैं और landlords की भी certain duties and obligations होती हैं. Tenant का ये right है कि he should get a house which is habitable and fit for his normal use. और लैंडलॉर्ड की ये एक्सपेक्टेशन होती है कि ठीक है, आप हमारा घर यूज़ कर रहे हैं तो यू शुड पे द रेंट ऑन टाइम. सो ऑलवेज देयर इज़ सर्टेन अमाउंट ऑफ टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट. तो टेनेंट्स के लिए जो है यहाँ पे लीगल एड वगैरह भी है. दे कैन गो एंड get free advice from the city council as well. They can contact city council and they actually intervene on behalf of the tenants. But unfortunately, as far as the landlords are concerned, there isn't any such service available. अगर landlords के साथ कुछ problem हो रही है, they have to then take out a private case against the tenant. So अगर tenant आपको rent pay नहीं कर रहा और you are struggling to have them evicted from your house, we can definitely help them with that. शायद अब ज़रा ब्रेक की तरफ जा रही हैं, तो ब्रेक से पहले आपको व्यूज़र को ये बताएंगे हमारे जो senior solicitor advocate Raj Chopra Saab, he's here in the studio. He will be joining after the break, and that's going to be great news because we're going to be talking about some of the issues about road traffic offences and other things about police custodies, and he will help you. So we welcome Raj Chopra in the next part of the programme. So keep watching Hidayat, keep watching Legal Matters. We'll be back in a few moments. Thank you.